morning, students. Now, in this lecture, we have to discuss solution of exercise 2.2 of chapter number 2. So, let's start with question number 1. Solution of exercise 2.2 chapter is inverse trigonometric ratio. So, first one is here we have to prove the following. Prove that sums are there. First question is 3 sine inverse x is, we have to prove 3 sine inverse x is equal to sine inverse 3x minus 4x cube, 3x minus 4x cube, where x belongs to closed interval minus 1 by 2 plus 1 by 2. This is given. We have to prove this one. Done. So here, if we check this bracket, we can see this is nothing but the formula of 3 sine theta. Check 3 sine theta minus 4 sine cube theta, which is nothing but the sine 3 theta. This is the formula of sine 3 theta. If we take x equal to sine theta. Done. So now let's try to verify this left hand side. So this left hand side is 3 sine inverse x. Now here we have to take this x equal to sine theta. So this will be 3 sine inverse sine theta, and according to our property we can write this one as a 3 theta. Done. This one is 3 theta. Now we will simplify our right hand side. So given right hand side is sine inverse 3x minus 4x cube, and here we are putting x equal to sine theta, taking x equal to sine theta. So this one is sine inverse 3 sine theta minus 4 sine cube theta. Clear? Taking x equal to sine theta. Hence this one sine inverse 3 sine theta minus 4 sine cube theta. 3 sine theta minus 4 sine cube theta is nothing but the sine 3 theta. So this one is sine 3 theta. Again we are using our property sine inverse sine x, where x is nothing but the 3 theta. So this is also 3 theta. So left hand side and right hand side both are equal. Say result 1 and result 2. Done. Hence we can directly say this one 3 sine inverse x equal to sine inverse 3x minus 4x cube. Simple. Okay. Now question number 2. Here we have to prove 3 cos inverse x. 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x. है ना, हम इसको हमने याद रखा था 34 एंड 43 के फॉर्म में. 34 होता है sin 3 थीटा एंड 43 होता है cos 3 थीटा. सो हियर आवर फॉर्मूला इज 4 cos cube थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा. है ना, ये दोनों फॉर्मूला हम नोट डाउन करके रखेंगे नोट में. चलो, सो हियर बाय कंपेयरिंग दिस वन वी कैन से here we have to take x equal to cos theta. फॉर्मूला का फॉर्म देख के आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेना है. ठीक है. सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड, हियर लेफ्ट हैंड साइड इज 3 cos inverse x. So taking x equal to cos theta, so this one is 3 cos inverse cos theta. Now this one is property, we can write cos inverse cos theta equal to theta. So value of left hand side is 3 theta. Done. Now simplifying right hand side. So here right hand side is cos inverse 4x cube minus 3x, taking x equal to theta. So this one is cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Hence this one is
cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta, done, which is our cos 3 theta. So this one is cos 3 theta and this is equal to 3 theta. So left hand side and right hand side both are equal, done, and hence we can say 3 cos inverse x equal to cos inverse 4 x cube minus 3x. Now students, question number 3. So for this question number 3, we have to prove tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 upon 24 is equal to tan inverse 1 by 2. Done. So here we have to prove our left hand side is equal to right hand side. So let's start with left hand side. So here given left hand side is tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 upon 24. Now here which formula is there? So here we can see this one is in the form of tan inverse. This is in the form of tan inverse x plus tan inverse y. So what is the formula? It is tan inverse x plus y upon x minus 1 minus xy. Done. This formula is there. So applying that formula, this is tan inverse x and this is y. So according to that formula, we can say this one is tan inverse 2 by 11 plus 7 by 24 x plus y upon 1 minus xy, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 by 11 into 7 upon 24. Hence this is equal to tan inverse. चलो एडिशन करना है. So here we have to take the LCM. So LCM of this 11 and 24 मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. So 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 4 26, 264. Now cross multiplication 24 2 जा 48, 11 7 जा 77. So simplification of this numerator is this one. Now divide by, we have to check this denominator. ब्रैकेट को बड़ा करना पड़ेगा, है ना. ये tan इनवर्स को यहाँ पर लिखना पड़ेगा. So here it's a 1 minus 7 2 जा 14 upon 11 and 24 264. Done. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा देखो. This is equal to tan inverse. Here 264 LCM आएगा, है ना, कॉमन डिनोमिनेटर, उसको कट कर देंगे और सिंप्लीफाई करके क्या होगा. Here एडिशन इज 8 plus 7 15 plus 1 4 plus 1 5 and 12 125, है ना. यहाँ पर 264 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन करके कट करना है. तो 264 minus 14 250 by 264 कट. दिस इज इक्वल टू tan inverse 125 2 जा, this one is 1 by 2. So tan inverse 1 by 2 is required right hand side. This is our required right hand side. Done. So this is how we can prove our left hand side is equal to right hand side. Clear students? Now question number 4. Very good question is there. 4. So here we are having 2 tan inverse, है ना, 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 equal to tan inverse 31 upon 17. चलो पहली नजर में देखने में ये दोनों सेम लग रहे हैं ना, कंपेयरिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 3. लेकिन यहाँ पर आप देखो, here this 2 is in multiplication with this tan inverse 1 by 2. तो ये tan inverse x plus tan inverse y वाला फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर 2 tan inverse के साथ मल्टीप्लीकेशन में. तो एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी हमने. सपोज इफ वी आर हैविंग 2 tan inverse x, है ना, सपोज 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया x के साथ, तो वो 2 को आपको निकालना पड़ेगा. वी हैव टू कन्वर्ट दिस 2 tan inverse x into tan inverse x. So 2 tan inverse x is nothing but the tan inverse 2x upon 1 minus x square. Done. 2 tan inverse x is converted into 2x upon 1 minus x square. So here our x is 1 by 2.
So first we are converting this to tan inverse x into tan inverse x. So this one is tan inverse 2 को निकालना है, it will be 2 into x. It's a 2 into x, x is 1 by 2 upon 1 minus x square. This is our x, it's a 1 by 2 square. Done. So now it is changed to tan inverse x plus tan inverse y. Done. This is our left hand side. Now simplify this one. So this one is tan inverse, here 2 cut, so it's a 1 upon 1 minus 1 by 2 square 1 by 4 plus tan inverse 1 by 7. Done. So what is the simplification? So this one is tan inverse. Now cross multiply this for this one. 4 1 are 4 minus 1 3. 3 by 4 4 ऊपर जाएगा, so it's a 4 by 3. 4 by 3 plus tan inverse 1 by 7. Now this is our tan inverse x plus y. Tan inverse x plus tan inverse y. So what is our formula? Tan inverse x plus tan inverse y. This is equal to tan inverse x plus y upon x minus x or 1 minus xy. Done. So applying that formula. So this is equal to tan inverse 4 by 3 plus 1 by 7 upon 1 minus 4 by 3 into 1 by 7. Done. चलो इसका सिंप्लीफिकेशन. दिस वन इज tan इनवर्स, यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 4 7 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 21 होल डिवाइड बाय 21 माइनस 4 17 अपॉन 21 21 21 गया. So this is equal to tan inverse 28 plus 3 31 divided by 17. Done. So tan inverse 31 by 17, which is our required right hand side. Clear friends? So two formulas are there. First we have to convert this to tan inverse x into tan inverse x. Then we have to apply this formula, tan inverse x plus tan inverse y. चलो इसको भी नोट डाउन करो. Question number 5. We have to write the function in simplest form. So given function is tan inverse square root of 1 plus x square minus 1. ये जो एंगल है ना, एंगल का सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है. So that is our function in simplest form. Function is tan inverse x. Tan inverse x को simplest form में लिखना है. So here we can take a trigonometric substitution, that is x equal to tan theta. X equal to tan theta. So if you are taking x equal to tan theta, so here you can say this one is tan inverse. Our function will be tan inverse, that is square root of 1 plus replacing x with tan. So it's a tan square theta minus 1 divided by x is tan theta. So this is equal to tan inverse square root of 1 plus tan square theta is square root of sec square theta minus 1 upon tan theta. Done. This is equal to tan inverse square root of sec square theta is sec theta minus 1 upon tan theta. Done. Now we are changing this sec theta and tan theta into sin and cos. So this one is tan inverse sec theta is 1 upon cos theta minus 1 upon tan theta is sin theta by cos theta. Done. So this is equal to tan inverse. Now this one is cross multiplication, 1 by cos theta minus 1. It's a 1 minus cos theta by cos theta. This one is sin theta by cos theta. It's a 1 minus cos theta by cos theta upon sin theta by cos theta. So this one is tan inverse cos cut. It's a 1 minus cos theta 1 upon sin theta. Done. So now we know that formula of cos 2 theta. Formula of cos 2 theta says that cos 2 theta is nothing but the 1 minus 2 sin square theta. Done. 1 minus 2 sin square theta. And
sin 2 theta. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Done. So from this formula, cos 2 theta minus 1 minus 2 sin square theta. Can we write 2 sin square theta? 2 sin square theta equal to 1 minus cos 2 theta. So here 1 minus cos 2 theta can be converted as 2 sin square theta. So instead of cos 2 theta, we are having 1 theta cos theta. So this is equal to tan इनवर्स है ना 1 माइनस cos थीटा 2 नहीं है 1 है, तो ये क्या होगा 2 sin square theta by 2. So this one is 2 sin square theta by 2, and here sin theta, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. So sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Done. So this is equal to tan inverse 2 2 cut 1 sin theta by 2 cut. So sin theta by 2 cos theta by 2 is tan theta by 2. So this one is tan inverse tan theta by 2. So this one is theta by 2. Done. Question is write the function in simplest form, or function is tan inverse. So here we have to write this one in terms of tan inverse. So from this mathematical substitution, trigonometric substitution, we can say our theta is, if you are taking x equal to tan theta, or theta is tan inverse x, or theta is tan inverse x. Done. So replacing this theta with tan inverse x. So our simplest form of trigonometric ratio is 1 by 2 tan inverse x. So converting this ratio tan inverse square root of 1 plus x square minus 1 by x into its simplest form, which is 1 by 2 tan inverse x. Done. So this is how we can solve this question number 5. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हर एक सम में से हमने कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना. तो सारे क्वेश्चंस करेंगे हम. सो हियर वी हैव टू राइट दिस फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड द गिवन फंक्शन इज tan inverse 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. डन. आप बोलेंगे सर ये आप सब्स्टिट्यूशन कहाँ से लेके आते हो? तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उससे आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन कौन से फॉर्म में है. डन. सो हियर इट्स अ x स्क्वायर माइनस 1. तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास होती है x स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में, tan के साथ रिलेटेड हो. सो tan स्क्वायर माइनस 1 ना 1 प्लस, ऐसे देखो और यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec square theta. So here can we write this sec square theta minus 1 equal to tan square theta. So sec square theta minus 1, so taking x equal to sec theta. So our trigonometric substitution is, let's say x equal to sec theta, x equal to sec theta. Done. So this one is tan inverse 1 upon square root of x, x is sec, so it's a sec square theta minus 1. So this is equal to tan inverse 1 upon square root of sec square theta minus 1. Sec square theta minus 1 is nothing but the tan square theta. So it's a square root of tan square theta. Square root of tan square theta. So square root of tan square theta is nothing but the tan theta. It's a 1 upon tan theta. So this one is 1 upon tan theta. 1 upon tan theta is nothing but the cot theta. Cot theta. We are in property of tan inverse tan theta, लेकिन यहाँ पर तो cot theta है. So we know the complementary angles. Tan inverse cot का complement क्या होता है? Tan. So here we can convert this cot theta as a tan 90 minus theta. It's a pi by 2 minus theta. So this is tan inverse tan theta. So this one is pi by 2 minus theta. Now what is theta? Theta is our assumption, which can be written as x equal to sec theta. So theta is sec inverse x. So this one is pi by 2 minus sec inverse x. So this one is simplest form. This one is simplest form of this tan inverse square root of 1 minus x square. Clear students? वैसा आप simplest form में convert कर सकते हैं. So now question number 7. So here we are given that tan inverse, है ना, ये जो सारे फॉर्मूला आ रहे हैं ना, वो आपके 12th के अंदर बारी बारी से भी आने वाले हैं. इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना, वो याद रख लेना. 1 minus cos x अपॉन 1 plus cos x.
where condition is function is defined for x less than pi. X less than pi. These are the condition for which our tan inverse is defined. Done. Now we have to write this function in simplest form. तो देखो simplest form के अंदर अगेन 1 माइनस कॉस आ गया, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था cos 2 थीटा का. cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. देखो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे. कैसे करेंगे? सो हियर 1 minus 2 sin square theta, this can be written as 2 sin square theta equal to, है ना, 2 sin square theta equal to 1 minus cos 2 theta. 1 minus cos 2 theta होगा, उसको हम लिखेंगे 2 sin square theta, है ना. cos 2 theta की जगह पर 1 minus cos x है ना. और here this 2 cos square theta, 2 cos square theta, that is equal to 1 plus cos 2 theta लिखेंगे. 1 plus cos 2 theta, तो ये हमारा रहा 1 plus cos 2 theta. 2 theta की प्लेस पर x है ना, इसको चेंज करना है. तो देखो कैसे करेंगे. तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos, है ना. अगर cos 2 थीटा है तो उसका हाफ हो जाएगा 2 sin square थीटा. so this one is 2 sin square, है ना, x का हाफ x by 2, 2 sin square x by 2, है ना. ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा. 1 plus cos x, ये हमारा x है तो x का हाफ हो जाएगा. तो इट्स 2 cos square x by 2, 2 cos square x by 2. डन. दिस इज सिंप्लीफिकेशन. 2 कट. so this one is tan inverse square root of sin square theta by cos square theta, tan square x by 2. Clear? Square root of tan inverse, square root of tan square x. So this one is tan inverse tan x by 2. So tan inverse tan x by 2 is nothing but the x by 2. ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस tan इनवर्स स्क्वायर रूट में जो भी था उसका. चलो क्वेश्चन नंबर 8. So here given function is tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x. Condition is 0 less than x less than pi. Done. इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 1 माइनस करके दिया हुआ था, यहाँ पर cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x. अभी कभी भी ऐसा भी फॉर्म आए तो फॉर्म को आपको याद रख लेना है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है. सो हियर tan इनवर्स, वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x. व्हाट वी आर डूइंग? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x. cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? cos x अपॉन cos x, 1 माइनस sin x बाय cos x. so this one is tan x. Done. Here cos x dividing cos x by cos x, 1 plus dividing sin x by cos x, tan x. 1 minus tan x, 1 plus tan x. Done. तो देखो ये क्या आ गया. So here we know that tan pi by 4 is nothing but the 1. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? देखो 1 की प्लेस पर tan pi by 4 रखेंगे. So this one is tan inverse tan pi by 4 minus tan x. यहाँ पर ये 1 की जगह पर यहाँ पर एक 1 मल्टीप्लीकेशन में होगा, ये 1 को ऐसे रखेंगे प्लस ये 1 की प्लेस पर रखेंगे tan pi by 4 इंटू tan x. जिसको भी प्रॉपर्टी आती है उसको समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं है, ये नहीं है तो क्या है हमारा. देखो ये tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y है ना. वहां पर tan x की प्लेस पर pi by 4 है, तो ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज नथिंग बट द tan x minus y. so here this one is tan inverse, है ना. दिस इज नथिंग बट द tan inverse इसका फॉर्मूला है pi by 4 minus x. दिस इज नथिंग बट द tan inverse pi by 4
माइनस एक्स, डन। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन, ये जो गिवन फॉर्मूला था उसका, है ना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेन इनवर्स विच इज 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स।